questions? नहीं sir. Okay. Alex? Good morning, sir. Good So morning. we'll be trying Right. this weekend probably. So not now, so but weekend, I think Saturday, Sunday. Okay. Yeah, same here. Okay. 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 Let's solve few more questions based on normal distribution. Okay. Question number 3. Recently एक फाइल मैंने अपलोड किया है. Anyway, question number 3 आपको जो कल के फाइल उसमें सब डिटेल मिल जाएंगे. Okay. Example number 3. The income group of 10,000 persons was found to be normally distributed with mean of rupees 7,500 per month and standard deviation of rupees 500. Okay. So here mu is 7,500 rupees and sigma is 500 rupees. Okay. The question is, show that of this group, about 95% had income exceeding 6680. Okay. Method prove क्या करना है? Probability of x greater than 6680 equal to 0.95. Okay. This is what we want to prove. Okay. So let's try to find the probability of x greater than 6680. So to find this probability, we'll standardize the normal distribution. X minus mu upon sigma greater than 6680 minus mu upon sigma. That is equal to P of Z greater than uh, 6680 minus mu, that is 504 320. 820 divided by 500, right? 820 divided by 500, this get cancelled. 5 ones are 5, 5 6 are 1.64. Okay. That 2. Minus. Okay. Now, find out क्या करना है हमें actually. Probability of Z greater than minus 1.64. Minus 1.64 must be somewhere over here. Minus 1.64. Sorry. Greater than, no? Z greater than 1.64 means this portion. Okay. अब इसको कैसे करेंगे? Yes. So 0.5 to we'll take the whole plus region, the right hand side, and then we'll even take part of this. Correct. Yes. This portion is so 0.5 and okay, so this is equal to probability of minus 1.64 less than Z less than 0 plus 0.5. Okay. So what about this? We'll take the plus side again. Correct. Mirror image. Minus 1.64. इसका mirror image क्या होगा? Plus 1.64. So this region is same as this region. So it is equal to probability of 0 less than Z less than 1.64.
0.64 plus 0.5, and this value is given. Okay. Z at 1.64 is 0.45. 0.45 plus 0.5, that is equal to 0.95. Okay, or it is equal to 95%. Okay. And this is what we want to prove. Okay, so the income of 95% workers is more than 6680 rupees. Okay. And similar question hai, only 5% had income exceeding 8320. Okay. The second, ये हो गया first. In second question, we want to find probability of 8320. 8320, 8320 minus mu, that is again 820. हाँ सेम आएगा बट ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, फाइन. ओके, ये थोड़ा डिफरेंट है. Z greater than 1.64. 1.64. We're going to find this probability. Now this is equal to 0.5, the whole, minus probability of 0 less than Z less than 1.64. Right? That is equal to 0.5 minus 0.45, or it is equal to 0.05 or 5%. Okay. That's it. Question number 4 easy है, you can do. Okay. What is mu over here in question number 4? Sir, mu 1200. 1200 and mu is deviation? 1200 and standard deviation 400. That is sigma. Sigma 400. Okay, fine. Okay. You can do, na? Yes, sir, you can do it. Example number 5. Assume that mean height of soldiers to be 68.22 inches. Okay, so mu is 68.22 inches. 8.22 inch. With variance of 10.8. Okay. Standard deviation 10.8. No, it's variance. It's not a standard deviation. Okay. Sigma square is 10.8. Okay. Okay. So sigma standard deviation is a positive square root of variance. Okay. Okay, you have to calculate square root. So we'll have to calculate, or the yes, it will be given in the sum. नहीं calculate करना पड़ेगा. 10.8. Sir, it is 3.28. 3.28. 3.28 ना?
Okay, 3.286. Yes, 3.286. 3.29 we take. Yes, we can take 2. So here standard deviation is 3.29. Okay. Find out क्या करना है. Assuming a height to be normally distributed, how many soldiers in a regiment of 1,000 would you expect to be over 6 feet tall? Okay, that is probability of X greater than over 6 feet tall. X is greater than 6. No, be careful. Here mu is given in terms of inches. Sigma square is also 10 square inches. So this is sigma is inches. Okay, 3.29 inches. So all data is given in terms of inches. And the question है how many would be over 6 feet tall. Okay, so we have to convert it into inches. Now 1 feet equal to 12 inches. So 6 feet matlab 72. 72. Okay. So probability of X greater than 72 find out करना है in first question. Sir, your camera has gone blur, sir. I think it's focus. It's not able to focus. Again? Yes, sir. Now it's clear. ठीक है. Okay. Fine. So let's solve. So probability of X, Z greater than 72 minus 68.22 divided by 3.29. So how much it is? Three point 3.78 divided by 3.29. 1.15 आ रहा है क्या? The given value is Z at 1.15. Sir, 1.15. 1.15. So it is equal to 0.5 minus P of 0 less than Z less than 1.15. डायग्राम निकाल के देखो, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा क्या किया आपने. तो गिवन वैल्यू इज 0.3749. सो ये आंसर होगा 0.1251. 0.1251. तो अभी नंबर ऑफ सोल्जर्स निकालना है आपको इन अ रेजिमेंट ऑफ 1000. तो नंबर ऑफ सोल्जर्स इक्वल्स टू 125. 125 approximately equals to 125. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन डायग्राम the right hand side लेंगे. हाँ, right hand side. Yes, I want to हो जाएगा आपका 1.15 मतलब this total 0.5 minus this portion. Yes, I just want to check my diagrams. Okay. Second question. क्या है? Below 5.5 feet. 5.5 feet means 66 inches. And below मतलब X less than 66.
2.22 divided by 3.29 must be 0.68. माइनस होगा, राइट? Yes, sir, minus is. Below. So actually 0.67 आ रहा है sir. 67 आ रहेगा, तो वैल्यू चेक करना चाहिए. 50. एक मिनट मैं चेक करता हूँ. 60. Yes sir, 67 होगा sir. X is less than 67 होगा. Yes, 67 होगा. ओके. अच्छा, फिर गिवन वैल्यू 68 का दिया है. नहीं, because आपने ये जो लिया ना, what is saying X is less than 5.5 inches is 67. 5.5 feet is 67 inches. Because 5 12s are 60. 65 हो जाएगा. 66 होगा ना? नहीं, 66 होगा सर. 5.5 multiplied by 12 करना, Alex. 66 होता है ना? नहीं, it's not 5 feet 5 inches. It's 5.5 feet. मतलब 1 feet equal to 12 ना? तो 66 66 ही हो रहा है सर. 66 inches minus 68.22 into 2 divided by 3.29. 3.29. 0.6747. हाँ, ठीक है. ओके, ठीक है. 6 minus 0.6747 आ रहा है. बट गिवन वैल्यू 68 है, तो विल टेक 68. ओके. 0.68 एग्जाम में हुआ है तो क्या अगर एग्जाम में ऐसा आया तो मतलब देन बिकॉज अगर वैल्यू 6.67 हो जाएगा हमारा, तो आप लाइक इन दिस केस एग्जाम में जो दिया है वही देंगे ना. क्वेश्चन में जो दिया है ना, ठीक है. इट इज 6747 आ रहा है, मतलब 675 अप्रोक्सीमेटली. तो राउंड ऑफ आप 5 है ना, तो राउंड ऑफ 67 भी कर सकते हो, 68 भी कर सकते हो. राइट, ठीक है. 68. हाँ, अब इसका मिरर इमेज होगा दिस वन. 0.68 मतलब probability of z greater than 0.68 or it is equal to 0.5 total minus p of 0 less than z less than 0.68, and that value is given 0.2517. So 0.2517 मतलब 2483. Okay. Now third question क्या है? Between 5.5 feet and 6 feet. ये पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. See, now this probability, now I'm talking about x. Let us suppose that this is standard normal curve. Sorry, this is normal curve for x. So below 66 मतलब this region, above 72 मतलब this region. Okay. So this probability is nothing but 1 whole is 1 minus p x less than 66. See, from total we have to subtract
this portion as well as this portion, right? So minus P of X greater than 72. Okay. We have already calculated these two values. First value is 0.2483 and ये क्या था? 0.1251. फाइनल आंसर नहीं ये 0.1251. So Sir, answer is 0.6266. 0.6266. Okay. ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, हम वो सॉल्व करेंगे अभी. Okay. It is given that wages of workers in a factory are normally distributed with average wage rupees 4,000. Okay, मतलब mu है 4,000 and standard deviation of rupees 400. सर ये क्वेश्चन बैंक आपने ऑलरेडी दिया है क्या? हाँ, ग्रुप में देखो ना, प्रोबेबिलिटी नाम की है. Mu is 4,000 and sigma is 400. Okay. Now question क्या है? Find the highest wage of lowest paid 10% worker. Okay. Now here actually probability is given. Now we want to find for what value of x the so let's suppose that value. Let me explain with the help of a diagram. Fine. This is axis of symmetry. We want to find the value of x for which this area is 10%. Okay. We want to find the highest wage of lowest paid 10% workers. Lowest paid 10% worker आपके इस region में रहेंगे. Okay. Similarly, अगर वही चीज highest paid पूछते हैं, तो it will be on the right side. Okay. Say suppose that this is standard normal curve, then it is symmetric about the line z equal to 0. तो आपका z यहाँ से बढ़ रहा है. It is increasing from left to right, right? So lowest paid worker will be on the left side and highest paid worker will be on the left side. Lowest paid worker on the left side and highest paid worker on the right side, right? Now we want to find this value of z. Let us suppose that it is z0, for which probability of z less than z0 equal to 0.1. 10% निकालना है ना. Okay. We can translate the question as for what value of z0 the probability of z less than z0 is 0.1. लॉजिक समझ में आ गया इसमें? Shall I repeat? Yes, sir. समझ में आया? रिपीट करना. समझ में आ गया मुझे. आ गया ना समझ में? ठीक है. नाउ हम क्या करेंगे? फर्स्ट इंस्टेड ऑफ assuming directly z, हम x से स्टार्ट करेंगे, राइट? सपोज दैट x0 is the required value. मतलब क्या है? Probability of x less than x0 equal to 0.1. Fine. Okay. Now we'll convert it into standard normal variable. So x minus mu upon sigma less than x0 minus mu upon sigma equals to 0.1. Okay. Now let us call this as z0.
So let Z0 equal to X0 minus mu upon sigma. Okay. Therefore, probability of Z less than Z0 equal to 0.1. Okay. Hope you are writing simultaneously. लिख रहे हो ना? Yes, sir. So- Yes. So Okay, 0.1 minus mu upon sigma क्यों नहीं लिया जाता? It should be equal to कहाँ पे? both the sides. कहाँ पे? 0.1. नहीं, अब यहाँ पे क्या है? Okay, 0.1 I is a got it. probability. वो Z की Yeah. वैल्यू नहीं है या X की वैल्यू नहीं है. We want to find the value of X0 for which probability of X less than X0 is 0.1. क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है? For the highest wage of lowest paid 10% workers. Lowest paid मतलब यहाँ इस रीजन में आ गए. This is lowest paid 10% worker. Okay. So if we assume that this area as 10% और मतलब probability हो गई इसकी 0.1. Okay. The remaining is 0.9. हाँ ठीक है, वो रिमेनिंग 0.9 है ऑब्वियसली. तो वी वांट टू फाइंड, यहाँ पे देखो ये लोएस्ट पेड वर्कर यहाँ पे, दिस इज द हाईएस्ट वेज. ओके, so we want to find probability of x less than we want to find value of x0 for which probability of x less than x0 is 0.1. so we are actually interested in x0. x0 is unknown value. here probability is given. अभी तक जो हमने एग्जांपल सॉल्व किए उसमें क्या था? the values X0 of दिया x, था. हाँ x के वैल्यूज दिए थे. we want to find probability for x greater than or less than or between the given values of x. okay, यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे probability दी है एंड हमें वो वैल्यू निकालने, corresponding value of normal variable we want to find. okay, अब नाउ यहाँ बी केयरफुल. थोड़ा सा मैं अभी तो एडिट कर लेता हूँ. ओके फाइन. नाउ व्हाट वुड बी इमेज ऑफ, इसका मिरर इमेज कहाँ पे जाएगा? अब ये इफ Z0 is on the left side, Z equal to 0. Z0 लेफ्ट साइड पे तो उसका मिरर इमेज होगा -Z0. ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है लोगों का, स्टूडेंट्स का? because this is axis of symmetry is Z equal to 0. So the values on the right side must be positive and values on the left side must be negative. Okay. See, if the value of Z0, अगर Z0 की वैल्यू से -1.5 है, okay, then -Z0 क्या होगा? -Z0 minus of -1.5, that is 1.5. Got it? So do not confuse by this negative sign. Okay. It is minus of Z0. The value of Z0 itself is a negative, so minus of minus is positive. That is why it is on the right side of axis of symmetry. Fine. Okay. So this area is also equal to 10%. Okay. 10% or 0.1. Got it? Fine. मतलब क्या है? Therefore, probability of Z greater than minus Z0 equal to 0.1. Okay. Now, what does it mean? It means that this area 0 to minus Z0 must be 0.4, okay, because this total area is 0.5, from which if we subtract this, what is left? 0.4. So therefore, probability of 0 less than Z less than minus Z0 must be 0.4. Okay. Means what? Z at minus Z0 must be 0.4. Okay. अब यहाँ पे given है देखो, Z at 1.28 is 0.4. Okay. Shall I remove this? Okay. So minus Z0 must be
1.28. Okay. Got it? चाहे तो ऐसे यहाँ पे लिख लो. Therefore, Z at minus Z0 must be 0.4. Okay. But it is given that Z at 1.28 is 0.4. So Z0 must be 1.28. Therefore, minus x0 minus mu upon sigma should be 1.28. Okay. Now let's substitute the values of x0, mu and sigma. So x0 minus mu is 4000 divided by 400 equals to minus 1.28. Okay. नेगेटिव साइन मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया. Therefore, x0 minus 4000 equal to 400 into 128. So 512, sir. 512.512. Okay. So x0 is 4000 minus, sorry. Yeah, negative sign है ना, minus 512. So it is 3488 Yes, sir. rupees. Okay. So highest wage of lowest paid 10% workers is 3488. See, आप verify कर सकते हो. If you obtain P of X less than 3488, it will be 0.1. ये probability कैसे निकालनी आपको पता है. Okay. So if you calculate this, you will get 0.1. Got it? समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी कंफ्यूजिंग मेथड. और कोई दूसरी मेथड नहीं है क्या सर? और कोई दूसरी मेथड नहीं हो सकती? नहीं दूसरी कोई मेथड नहीं है. यहाँ पे ये उल्टा है. नॉर्मली अभी हम क्या कर रहे थे, कोई x की आपको लिमिट दिया था, बिलो से बिलो 10,000 या बिलो 4,000 कुछ भी हो, या जैसे लेस देन 72 इंचेस, मोर देन 66 इंचेस, उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे. अब यहाँ पे उल्टा है. हियर प्रोबेबिलिटी इज गिवन एंड वी वांट टू फाइंड दैट लिमिट. ओके, राइट. अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, लेट्स ट्राई सेकंड क्वेश्चन. द लोएस्ट वेज ऑफ हाईएस्ट पेड 15% वर्कर्स. अब हाईएस्ट पेड 15% वर्कर कहाँ पे होंगे? Right side, sir. राइट साइड. ओके, हाईएस्ट पेड 15%. Okay, 15% or 0.15. Okay, and we are actually interested in lowest paid. मतलब ये निकालना है हमें x0. For what value of x equal to x0, probability of क्या है? Probability of x greater than x0 is 0.15. Got it? अब मुझे यहाँ पे x0 फाइंड आउट करना है. इसको हम अगेन कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में. P of z greater than x0 minus mu upon sigma equal to 0.15. So I'll assume that this is equal to z0. Okay. So let us suppose that z0 equal to x0 minus mu upon sigma. Okay.
So P of Z greater than Z0 is 0.15. Okay. So 0 to Z0 क्या होगा? (0.35). Correct. So this region total is 0.5. 0.5 minus 0.15 is 0.35. Okay. मतलब क्या है? Z at Z0 is Z0 is 0.35 and 0.35 किस वैल्यू के लिए? 1.04 के लिए. Okay. So Z0 must be 1.04. Okay. Therefore, Z0 must be 1.04. Okay. So that is x0 minus mu upon sigma equal to 1.04. Example, I'll directly substitute the values. So 1.04 0 minus, huh? Yes. 1.04 क्वेश्चन में दिया है ना. Z at 1.04 is 0.35. अब 35 चेक करना है. 0.35 किस वैल्यू के लिए? For 1.04, the probability is 0.35. अभी उल्टा देखना है हमें, राइट? नहीं सर, सम नहीं था मेरे पास सर, वही मोबाइल यूज कर रहा हूँ सर. क्या? I didn't have the sum in front of me, hence. Okay. मैं एप्लीकेशन में वापस बैक जाके देख रहा हूँ ना, इसलिए वो हो रहा है. सॉरी. Okay. ठीक. Sir, answer is 4416. 4416. Okay. हाँ, ये 416 आएगा इसका आंसर. ठीक है. तो 4000. So x0 is 4416 rupees. Right. इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो इजी है. यू कैन इजीली डू इट. Percentage of workers whose wages are between rupees 3,500 and rupees 4,200. मतलब क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी. अभी नॉर्मल हो गया क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ 3,200 लेस देन x लेस देन 3,500 not 3,500 to 4,200. ओके. इसको आप कर सकते हो इजीली, राइट? And then you have to write answer in percentage because question में पूछा है percentage of workers. It will give you probability. So to convert it into percentage, simply क्या करना है? Multiply probability by 100. ठीक है. So I'm leaving third part as homework. Now in example number 7, it is given that 1,000 light bulbs with mean life of 120 days are installed in a new factory and their length of life is normally distributed with standard deviation of 20 days. Okay. How many bulbs will expire in less than 90 days? So पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, probability of x less than 90. Okay. Second question थोड़ा सा tricky है यहाँ पे. How many if it is decided to replace all bulbs together, what interval should be allowed between replacement if not more than 10% should expire before replacement? Okay. So here mu is 120 days.
and sigma 20 days. अब ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी इन्होंने डिसाइड की है कि they will replace all bulbs if 10% or less are क्या बोल रहा है 10%, if not more than 10% should expire before replacement. %. Okay, so we want to find value of this x0 for which probability of x less than x0. 10% के above नहीं जाना चाहिए, means what? Number of fuse bulb should not be more than 10%, right? So if it is below 10%, then we'll replace all the bulbs, all 1000 bulbs at a time. So we want to find probability of x less than x0. We want to find a value of x0 for which probability of x less than x0 equals to 0.1. Similar question है जो पहले हमने किया था, right? तो इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तो क्या होगा, p of z less than z0 equal to 0.1. अब यहाँ पे मेरा आ जाएगा फिर z0, इसका मिरर इमेज हो जाएगा -z0 -z0. हाँ, so probability of z greater than -z0 equal to 0.1 or probability of 0 less than z less than 0 less than -z0 equals to 4. Total is 0.5 minus 0.1. That is p at -z0 equal to 0.4 and that is 1.28. जो पहले क्वेश्चन में भी यूज किया था ना, 1.28. हाँ, तो 1.28. So -z0 is 1.28. Okay. अब therefore z0 is -1.28 and z0 is what? x0 minus mu over here is 120 divided by sigma is 20. So ये हो जाएगा और 25.6 35 minus 25.6. x0 minus 120. So x0 equal to 94.4. Okay. Okay. And this will be in days. Okay. Means what? All bulbs should be replaced after Approximately every 94 days. 94 days. Okay. So 94 days के बाद हम सभी bulbs replace करेंगे. So at any point of time, the number of fuse bulb will not be more than 10%. Okay. Now question number 8. The lifetime of certain kinds of, okay, ये भी simple है. Find probability that one of these electric devices will have lifetime of more than 350 hours. That is x greater than equal to 350. कोई issue नहीं है. What percent will have lifetime? In second question of example 8, आपको आंसर परसेंटेज में देना है. Okay. So
So probability निकाल के multiplied by 100. In third question of example 8, also we want to give answer in terms of percentage. So probability निकाल के आपको 100 से multiply करना है. Okay. Now example number 9. In an intelligent test given to 1500 candidates appearing in an examination carrying a maximum of 100 marks, it was found that marks were normally distributed with mean of 39.5 and standard deviation 12.5. Okay. Determine the number of candidates who secured first class for which minimum 60 marks is necessary. Okay. मतलब क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? X is more than 60. Correct. X is more than 60. Okay. So इससे आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1500 से, बिकॉज 1500 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन डू इट. हाँ, एग्जाम्पल नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी है. टाइम टेकन by a crew of a company to construct a small bridge is normal variate with mean 400 labor hours and standard deviation of 100 labor hours. Okay. Mu is 400 hours and sigma is 100 hours. Okay. What is the probability that bridge gets constructed between 350 to 450 hours? तो पहला क्वेश्चन तो इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. फर्स्ट क्वेश्चन, P of 350 less than X less than 450, between 350 to 450 hours. okay. हो जाएगा नहीं है? Yes sir. ठीक है. हाँ. Now second question थोड़ा सा ट्रिकी है. Second question of example 10. If company promises to construct the bridge in less than 400 labor hours and agrees to pay penalty of 100 for each labor hour spent in excess of 450. Okay. What is the probability that company pays a penalty of at least 2000? Okay. मतलब क्या है? Now, when company will pay penalty of 2000 or more, X is more than 450. नहीं, 450 के ऊपर गया तो पर 1 लेबर आवर कंपनी पेज 100 रुपीज एज अ पेनल्टी. ओके. लेकिन 2000 और मोर पेनल्टी देनी, मतलब तो 470 के ऊपर हो जाएगा. मतलब डेडलाइन है 450 आवर्स का. डेडलाइन के ऊपर जितना डिले होगा, फॉर विच द कंपनी विल पे ₹100 पर आवर बियॉन्ड 450 आवर्स. ओके. अब 2000 उसको पे करना है, मतलब क्या है? डेडलाइन के ऊपर 20 आवर्स गए, मींस व्हाट? 470. So if a project is completed in 470 hours, company will pay 2000 rupees as a penalty. अब यहाँ पे क्वेश्चन है मिनिमम 2000 ना, मींस व्हाट? हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 470. इसके ऊपर गया तो ऑब्वियसली कंपनी विल हैव टू पे मोर देन 2000 rupees as a penalty. Okay. So we want to find 470 कैसे आ रहा है? ग्रेटर देन 470. हाँ, 450 आपका क्या है? डेडलाइन है.
यस 450 आवर्स में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, राइट? यस तो अप टू 450 होता है तो कोई पेनल्टी नहीं है, उसके ऊपर एक 1 आवर ज्यादा लग गया तो कंपनी हैव टू पे 100 रुपीज एज अ पेनल्टी। तो यस मिनिमम 2000 पेनल्टी पे करनी है, मतलब मिनिमम 20 डेज डिले होना चाहिए, मिनिमम 20 डेज डिले बियॉन्ड डेडलाइन, राइट? डेडलाइन है आपका 450, देखो ये है डेडलाइन 450, ये आ गया आपका 470, तो 470 और ऊपर गया टाइम, राइट? In that case, company will have to pay 2000 or more rupees as penalty. Fine. So x greater than equal to 470 हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक? एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो ये सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ओके? तो रिमेनिंग पार्ट छोड़ दो। यस सर वी विल ट्राई। हाँ, example 11, a workshop produces 2000 units of an item per day. The average weight of units is 130 kg with standard deviation of 10 kg. Assuming normal distribution, how many units are expected to weigh less than 142 kg? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, P of x लेस देन 142 निकालना है, ठीक है? एंड आंसर को फिर आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 2000, बिकॉज इट इज अ लॉट ऑफ 2000 यूनिट्स। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 12 थोड़ा सा डिफरेंट है। द यूजफुल लाइफ ऑफ अ सर्टन ब्रांड ऑफ रेडियल टायर has been found to follow a normal distribution with mean 38,000 किलोमीटर। मीन क्या है? 38,000 किलोमीटर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है 3,000 किलोमीटर। 30,000 kilometer and standard deviation is 3,000 kilometer. Okay. If dealer orders 500 tires for sale, then find the probability that randomly chosen tire will have a useful life of at least 3,500 kilometers. Okay. So in first question, P of x greater than 35,000 निकालना है आपको। ओके, पहला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, P of x greater than 35,000, right? At least बोला है ना उन्होंने, so 35,000 or more. Then second question, find the approximate number of tires that will last between 40,000 and 45,000. मतलब P of 40,000 less than x less than 45,000. Okay, चलो इसको सॉल्व करते हैं, let's try this. Because ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे। So this equal to probability of 40,000 minus 38,000 divided by 3,000 less than z less than 45,000 minus 38,000 divided by 3,000. So this is 2,000 divided by 3,000 is 0.2 by 3, मतलब 0.666 और 0.67 less than z less than 7,000 divided by 3,000. So 2.33. 2.33. Okay. Hmm. Zero, 0.67 and 2.33.
ओके कैसे करेंगे इसको? से 0 to 0.67. नहीं, ये कितना है यहाँ तक? P of 0 लेस देन Z लेस देन 2.33. ओके यहाँ से यहाँ तक माइनस इतना हम माइनस कर देंगे उसमें से, राइट? दिस पोर्शन Yes, sir. that is minus P of 0 less than Z less than 0.67. These two values must be given. 0 Z at 2.33 is 0.490 0.4901. Okay, minus 0. Z at 0.67 is 0.2486. Okay. 0.2415. 0.2415. 0.2415. एंड नंबर ऑफ टायर्स बोला है ना इन्होंने यहाँ पे? 500 से मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ, multiplied by 500 because total 500 tires he has bought. 121 approximate. 120. So approximately 121 tires will give life between 4000 to 40,000 to 45,000. Okay. हाँ, अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा ट्रिकी है. If an individual buys 2 tires, okay, then what is the probability that these tires will last at least 38,000 kilometers? Okay. ये हो गया ना? Yes, sir. Third question, at least 38,000. That is probability of X greater than 38,000. Okay, but this will give probability for single tire, individual tire. But if a person buys 2 tires, then first tire की probability ये हो गई into second tire की probability again same. Okay, actually it is the concept of independent event. ये कैसा एक्चुअली? एक काम करते हैं, इसको x1 डिनोट करते हैं एंड इसको x2 डिनोट करते हैं. okay, now probability of A intersection B, if events, इसको मत लिखो, don't write this. Events, if event A and event B are independent, then probability of A intersection B is equal to probability of A into B. Okay, multiplication लेना है. okay? मतलब the probability of occurrence of event A and event B is equal to probability of A into probability of B, provided that two events are independent. Okay. Now, in case of tires, the life of tire 1 is independent of that of tire 2. Okay. So here, if we assume that A1, if we assume event A1 as tire 1 gave more than 38 hours of life, and B as tire 2 gives tire 2 also gives 38 hours of 38,000 kilometers of life. Okay, then हमें actually यहाँ पे find out क्या करना है? If a person buys 2 tires, then what is the probability that both tires will give more than 38,000 kilometers? Okay, that is probability of event A and event B. दोनों टायर 38 के ऊपर जाने चाहिए, right? So यहाँ पे हमें find out actually ये करना है, right? So that is equal to probability of X greater than 38,000 square.
फाइन फाइन। अब ये निकाल सकते हो आप, दिस वैल्यू यू कैन कैलकुलेट। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 38,000। नहीं, एक मिनट, अच्छा 38,000 ही पूछा है, एंड मीन इज ऑल्सो 38,000 ना। यस सर। मीन इज 38,000, तो मतलब p इज ग्रेटर देन z ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ये होल स्क्वायर, एंड p z ग्रेटर देन 0 इज 0.5। ओके, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। p greater than z equal to 0 means what? The area on the right side of axis of symmetry means this region. This region is 0.5, इसका square, so it comes out to be 0.25. So the required probability is 0.25. Fine. ठीक है, you try example number 10, sorry, 13. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे जो वैल्यूज है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दे आर गिवन इन सेकेंड्स। ओके, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल विल स्पेंड बिटवीन 2 to 3 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 मिनट्स मतलब 120 सेकंड, 3 मिनट्स मींस 180 सेकंड। सो in second question of example 13, you have to find p of 120 less than x less than 180. Okay, उतना ही ट्विस्ट है, अदरवाइज एग्जाम्पल नंबर 14, फर्स्ट पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रोपोर्शन ऑफ बैटरीज हैविंग लाइफ टाइम बिटवीन 223 एंड 256 आवर्स, दैट इज p of 223 less than x less than 356. Question number 2 of example 14, the life in hours above which we will find best 15% of the batteries. Okay, best 15%. बेस्ट 15% कहां पे होंगे? सर राइट साइड सर। हाँ, ये एवरेज हो गया, दिस इज एवरेज। इस साइड पे वर्स्ट होता जाएगा, इस साइड पे बेस्ट होता जाएगा। ठीक, तो बेस्ट 15% मतलब ये हो गया 15% और 0.15. Okay, so we want to find the value of z0. Okay, for which probability of z greater than z0 must be 0.15. Okay, तो क्वेश्चन क्या है, z0 equal to what, for which probability of z greater than z0 equal to 0.15. Okay, ये हमें फाइंड आउट करना है z0 की वैल्यू। अल्टीमेटली हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है x0. ओके, x0 इक्वल टू व्हाट, और z0 इक्वल टू x0 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? यस सर, जो प्रीवियस सम्स किए वैसे राइट सर। हाँ, प्रीवियस आज जो जैसे उल्टा करना है। हाँ, उल्टा करना है। प्रोबेबिलिटी दिया है हमें z0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एंड यूजिंग z0 विल फाइंड x0. ओके, हाँ, एग्जांपल नंबर 15 भी सिमिलर है। A minimum height to be prescribed for eligibility to government service such that 60% of young men will have a fair chance to coming up to the standard. The height of young men is normally distributed with mean 151.5 centimeter, that is mu is 151.5 centimeter, and standard deviation is 6.375. Determine the minimum specification of height. Okay, मतलब 60%
कैंडिडेट क्वालिफाई होने चाहिए इन द पासिंग स्टैंडर्ड। पासिंग स्टैंडर्ड क्या है? वही हमें फाइंड आउट करना है इनफैक्ट। ओके, yes, we want to find a height for which if we set that height as a benchmark, then 60% of the candidates should have height, minimum height of that particular benchmark. Okay, तो 60% मतलब कहाँ पे आएगा? उसके अबाउ। सपोज x0 हम बेंचमार्क सेट करते हैं, so p of x greater than x0 must be 60%. Okay, तो x0 कहाँ पे होगा? See this portion is 50%, तो 60% मतलब यहाँ पे आएगा कहीं तो भी, right? So this should be your x0. Okay, fine. तो इसका अगर हम मिरर इमेज लेंगे तो माइनस x0 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ और दिस इज नथिंग बट 10%, राइट? ऐसे करता हूँ, तो p ऑफ x ग्रेटर देन, ठीक है, x0 इक्वल टू 0.6, सो p ऑफ x0 लेस देन x, उल्टा हो गया, less than 0 equal to 0.1. This area must be 0.1. Okay, तो इसका मिरर लेंगे तो क्या होगा? P of 0 less than x less than minus x0 must be 0.1. Okay, now we'll convert it into standard normal variate. That is P of 0 less than x, sorry, z करेंगे अभी यहाँ पे, z less than minus z0 equal to 0.1. Okay, where z0 equal to x minus x0, sorry उल्टा हो गया, x0 minus mu upon sigma. Okay, now for what value of z, the probability at z is 0.1, 0.255. Okay, so minus z0 must be 0.255. Fine. So z0 must be minus 0.255. So x0 minus यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू इज 151 divided by standard deviation 6.375 equal to minus 0.255. Okay, so calculate कर लो कितना आता है देखो. Okay, ठीक है, इसमें कोई डाउट है? Whatever we have discussed today, do you find it difficult or do you have any doubt? Sir, it's difficult, but not having doubt now. Okay, ठीक है. हाँ, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक डाउट भी नहीं आएंगे, राइट? Yes, yes, yes. Sir, ठीक है, your जितने भी answer एग्जांपल मैंने इनकम्प्लीट रखे हैं, यू कंप्लीट एट होम ऑन योर ओन. ठीक है, एंड लेट्स से
if you have any doubt. Sir, for this question, answer is 153.125. चेक करना पड़ेगा. 153 तो नहीं आएगा, 151 से कम आएगा. 149. नेगेटिव आ रहा है. 149.875. Because minus 1.625 minus plus है ना? 151. 151.5 के नीचे जाएगा वो. 149.875. That's answer. See, प्रीति, लॉजिकली भी देखेंगे ना तो तुम्हारा देखो एवरेज कितना है 151.5. ओके, Yes. मतलब अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा 151.5 एवरेज सिमेट्री ना. तो इसके ऊपर 50% है, राइट. तो 60% मतलब ये तो हमें लेना ही है, इसके अलावा और कुछ पार्ट यहाँ से लेना है. तो ऑब्वियसली ये 151 से छोटा ही होगा. Yes, Right. sir. I forgot to take the minus sign. Minus हाँ, 0.2. ये नेगेटिव साइन है तो हाँ. Yes. So answer is 149.875. Okay. Equal to 149.875 875 सेंटीमीटर्स. हाँ, यूनिट मत बोलो इसका. सो क्राइटेरिया क्या रखना है? So that 60% should qualify. The minimum height should be 149.875 centimeters. Okay? तो इसके नीचे जो जाएंगे उसको हम डिस्क्वालीफाई करेंगे. ओके, तो हम क्या, सो विल स्टॉप फॉर टुडे. आप सॉल्व करो एंड देखते कोई डिफिकल्टी है तो. अदरवाइज टुमारो विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, मार्कोव चेन्स. Okay, sir. Thank you, sir. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी पढ़ा होगा आपने? Yes, sir. Not really, sir. Graduation में